चलो भाई आ जाओ, शुरू करते हैं। सो आज की कहानी है, मैंने करानी है। सो 0 0 0। ओके, चले। अच्छा जी, सो द क्वेश्चन इज डिफाइन एक्सेलरेशन। ओके। अच्छा, सो यू हैव टू राइट इट इज द rate of change of velocity. Okay, simple definition है, but you should be very careful with the word velocity. Okay, do not write the speed. Okay, or if you're writing the velocity per unit time, so this is also acceptable. Okay. Now the second thing is state the Newton's first law of motion. So Newton's first law of motion is basically where you have the force, where you have no forces. Okay, so we say that a body a body continues its state of motion, state of rest, or or motion with constant velocity, with constant velocity until acted upon by external force, right? Acha, since these two parts are basically the definition base, so let's just take a look at the examiner's report. Okay. So examiner says the definition of the acceleration was only stated in the acceptable form by a minority of the candidate. You can see that, okay? बेकार के नंबर कट रहे हैं, right? The useless mark detection, okay? So you just, if you just look at the marking key as well, what does the key says? Okay, so they're saying change in the velocity per unit time or rate of change of velocity, they both are acceptable, right? But if somebody write the rate of change of velocity per unit time, this is not the acceptable definition, okay? Don't write that. Okay, either write the rate of change of velocity or write the change in velocity per unit time. That's it, okay? Now, the second thing is the Newton's law. The required statement was given by a very small number of candidate, okay? So please be very careful. These are the two easy peasy mark, right? That you will that most of the student loses. Okay. So इन्होंने कहा है a body continues at a constant velocity until acted on by the resultant force, right? So I just added one more thing: continue in state of rest or motion with a constant velocity until acted upon by the external force. Fine. Let's move on. Okay. So part B says the variation with time t of the vertical speed v of the parachute is falling from an aircraft is shown. Okay. So first of all, this is a velocity time graph. So you should know that the gradient of the velocity time graph is the acceleration, right? And the area under the graph shows the displacement. Okay, the or the distance. Okay. So, A is the point from where it maybe jumps, okay? And as he descends, so that his acceleration decreases. As you can see that you have the decreasing gradient, right? So, and at from point B to point C, there may be constant velocity, right? Zero acceleration, like the terminal velocity, right? And at C, he should um, he he opened his parachute at point C, right? And that's why you can see a drastic change in the velocity, right? Um, and that is because of the air resistance that is acted upon the whole parachute, okay? And then वो आपको जो है एक lower terminal velocity पे आपको ले आया, right? This is the basic understanding of the parachute this graph, okay? So खैर I know. So they're saying calculate the distance traveled by the parachute in the first 3 seconds of the motion. Okay. So you can find the distance from the area. So distance is equals to area
under the graph. Just write this statement down at every graph questions, right? If you're finding the gradient, and the gradient giving you is the gradient is giving you some quantity, then just say that, okay, this gradient is equal to that quantity, right? So it's sometime the examiner sometime give you mark on that, and sometime won't. Okay, so area under the graph. So okay, so 3 is okay. So 10, 1, 2, 3, 4, 5. So this should be 8, 4, sorry, 8, 6, 4, 2. Okay. So they're saying 3. So it should be right there. Okay. So now you can see that 1 over 2 into base, which is 3, into height, which is 30. Right. Okay. So if you simplify, so हम ये कह सकते हैं कि भाई distance is equals to 1 over 2 into 3 into 30, right? So that would give you 15 times 3, 45, 45, right? अच्छा जी, चलो। अच्छा देख लेते हैं इतना एग्जैक्ट आ रहा है क्या। um, 30 पे आ रहा है, यस 45 तो आना चाहिए। देखो, look, that distance is represented by the area under the graph। देखो इस स्टेटमेंट का वो एक नंबर दे रहा है। ओके, सो and let me show you the examiner report as well. Okay, majority of the answers were correct. There were a surprising number of candidates who misread the graph or did not know the method of obtaining the distance traveled from the speed against the time graph. Okay, fine, they're not mentioning anything regarding this statement. Okay, so by the way, if you miss the that statement, so you will you won't get any mark. Okay, so this is what the marking key says. Okay, let's move on. They're saying explain the variation of the resultant force acting on the parachute from T0 to point A, at T equals to 15 to point C. Okay. So देखो ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा आता है, इट्स अ रिपीटेड क्वेश्चन, सो आप इसको याद कर लो, सो दैट वुड बी इजी, राइट? सो यहाँ पे इसने जंप किया है, राइट, एट पॉइंट ए, ही जम्प्स फ्रॉम द एयरक्राफ्ट, सो द ओनली फोर्स एक्टिंग on him should be his weight. Okay, and the weight remains the same throughout the motion, right? Okay, so he descends downward, so weight remains there, right? But the resistive force, the drag increases. Okay, so the drag increases, weight remains there, and at this point the drag will be equal to the weight, and that is why he reaches the terminal velocity. Okay, so this is the simple concept. Now इसी चीज को explain कर दो। So we can say that the weight of the parachutist remain constant, okay, and acts downward। पहली बात हो गई, right? um, as he move downward, the resistive force or the viscous drag, okay, so the drag, सर uh, एयर रेजिस्टेंस नहीं देख सकते? कह सकते हो एयर रेजिस्टेंस कह दो, ड्रैग कह दो, फ्रिक्शन फोर्स नहीं कह सकते, या चलो कह दो फ्रिक्शन फोर्स, ड्रैग, सो everything, all those forces are basically the opposing force. Okay, so the drag will, सर हाँ बोलो बोलो। ये द वेट ऑफ द पैराशूट में ये जो पैराशूट रिमेन्स कांस्टेंट हम्म। ये
क्या कहते हैं, यहाँ पे ना, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो रही है। नहीं नहीं, ये हर जगह पे कांस्टेंट रहेगा ना भाई। ये तो थ्रू आउट द जर्नी, ये पहला वाला पॉइंट जो है, दिस इज थ्रू आउट द जर्नी, ओके। दिस रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द जर्नी, ओके। क्लियर? सही ठीक हो है गया। सर। So as you move downward, the drag will increase, and um, टर्मिनल वेलोसिटी। एक मिनट, the drag will increase uh, with increase in the speed, okay, with increase in the speed. You should know that the drag forces, the resistive forces, all these opposing forces increases with a greater speed. Okay, so अगर तुम जो है ना higher speed पे जा रहे हो, you'll feel the greater resistive force. अगर आप lower speed पे जा रहे हो तो lesser resistive force तुम करोगे। drag का फॉर्मूला तुमने पढ़ा है, 1/2 होता है, एंड बल्कि 1/2 भी नहीं, रो सी ए वी स्क्वायर लाइक दैट। सही है। सो इट इज़ बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। सो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा ड्रैग फोर्स तुमने एक्सपीरियंस करनी है, ओके। एंड सो हेंस द ड्रैग फोर्स इंक्रीज विद द स्पीड। सही हो गया। सो इट reduces the resultant force, resultant force, okay, um, to zero when um, drag will be equal to the weight and he falls with constant speed. Okay, that's it. Constant speed. सर यहाँ Perfect. टर्मिनल वेलोसिटी नहीं लिखेंगे? लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। सही हो गया। सो ओके। अच्छा सर, ये वो टर्मिनल वेलोसिटी वाला सवाल है, वो जो 3 मार्क का होता है। सर ये हाँ आखिरी जी वाला हाँ जी एक्सप्लेन करेंगे। हाँ जी हाँ जी, वही है वही है। व्हेन ही ओ, फॉल्स विद कांस्टेंट स्पीड। सर, क्या चीज़? सर व्हेन ही फॉल्स विद कांस्टेंट स्पीड, ये समझा दें। देखो, जब उसकी ड्रैग, व्हेन द ड्रैग फोर्स एंड द वेट बिकम इक्वल, राइट, सो द रिजल्टेंट फोर्स विल बी जीरो, क्योंकि आप कह रहे हो कि भाई रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू वेट माइनस ड्रैग, राइट। सो इफ द ड्रैग एंड द वेट बिकम इक्वल, सो उनका डिफरेंस जीरो हो जाएगा, राइट। सो रिजल्टेंट फोर्स विल गोज टू जीरो, ओके। जी सर, तो ओके। जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगी, सो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। जब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, सो ही विल फॉल विद अ कांस्टेंट स्पीड, ओके। क्लियर हो गया? चलो, आ जाओ भाई, लेट्स मूव ऑन। So they're saying, describe the change to the frictional force on the parachute at 15 second at point C. Okay, so you can see that we have a drastic change in the speed. So this drastic change in the speed shows that the frictional force increases abruptly. So okay, so you can say that, okay, friction या drag कह लो, drag increases, right, as he opens the parachute at this point, okay, as he opened the parachute at that point. Okay, perfect. Now point C is between T15 and T22. Okay, between T15 and T22. Between T15, okay, yeah, yeah, and 22 would be, might be here, maybe like that. Okay, so सर ई पॉइंट है 22। E point आ रहा है, okay, जी।
ये बन रहा है, अच्छा जी चलो सही है। अच्छा सो अगर 22 इज राइट हेयर, सो हमारे पास स्पीड डिक्रीज हो रही है, राइट, वी रिलेट द ड्रैग फोर्स विद द स्पीड, ओके। सो जैसे ही उसने पैराशूट खोला, सो उस पे ड्रैग बहुत ज़्यादा फील हुआ, उसको ड्रैग बहुत ज़्यादा फील हुआ, जब उसको ड्रैग बहुत ज़्यादा फील हुआ तो उसकी स्पीड कम हो गई, जब उसकी स्पीड कम हुई तो उसकी ड्रैग फोर्स भी कम हो गई, राइट। सो यहाँ पे आप ये चीज़ देख लोगे, राइट। सो the speed decreases, right? Hence the, अच्छा उन्होंने फ्रिक्शन फोर्स कहा हुआ है बाय द वे, सो इफ देर सेइंग फ्रिक्शन फोर्स देन just better ways to say the friction force, okay, instead of just writing drag, okay. So the speed decreases, hence the frictional force, hence the friction force decreases. Okay, this is the concept, right? Is that clear, guys? So this is done. Okay, let me see the examiner report because it contains a lot of theory. So the examiner says majority of the answers did not relate the question. Candidate tends to describe the variation of the speed with the time as shown on the graph rather than explaining the variation in the resultant force. Okay, you have to be very careful if they're asking for the resultant force. You have to write you have to include all the resultant यार force in your concept. Yes. ये दूसरे वाले में फोर्स इंक्रीज नहीं होगी क्योंकि स्पीड डिक्रीज हो रही देखो ना स्पीड, देखो जो ड्रैग होता है, जो रेजिस्टिव फोर्स होती है, वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके साथ, स्पीड के साथ, राइट। सो ड्रैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल with the speed, right? So if the speed decreases, so drag will also decrease, okay? सर ये ओके सर टी इज इक्वल टू 15 जो पॉइंट सी है, हम्म। ये और सेकंड पॉइंट मतलब सिमिलर नहीं है? ये इधर, ये वाला और ये वाला, जी। देखो उसने कहा एट 15, ओके, और यहाँ पे उसने कहा बिटवीन 15 एंड 22, समझ लो। So if they're saying at 15, which mean उसकी velocity constant है, right, moving with a constant velocity, तो उसकी जो है ना, उसके बाद कोई ना कोई drag होगा या drag कोई ना कोई उसके बाद होगा, right, and frictional force कोई ना कोई होगी, right, but जैसे ही between 15 की बात करो, so you can see that the velocity is decreasing, so आप कहोगे कि the frictional force decreases, okay, clear, any problem? जी Perfect. एंड इसकी और भी चीज़ हम देख सकते हैं। कैंडिडेट ऑफन ट्राइड, ये पार्ट वन पार्ट टू है, सही है। कैंडिडेट ऑफन ट्राई टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर द चेंज इन द फ्रिक्शनल फोर्स rather than just describing the change, okay. So we are supposed to just describe the change, we don't need to mention why it increased or why it decreased. मैंने लिखा है कि भाई it is because he opens the parachute, right? So they're saying you don't need to write that, okay. So and so would have benefited for more केयरफुल रीडिंग ऑन द क्वेश्चन, ओके, तो वो मुझे भी गालियां दे सर रहा है, ओके, यस। पॉइंट सी पर पैराशूट वो खोलता है। हाँ जी सर हमें पता कैसे लगा? ब्रो, इसके अंदर चेंज आ रहे हैं ना ग्राफ में, उसने बताया भी नहीं है कहीं से, सही है, कहीं से नहीं पता चल रहा क्वेश्चन से। ये बस आपको ये इतना सेंस होना चाहिए कि भाई यहाँ पे उसने टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर ली है, राइट, एंड आफ्टर अचीविंग द टर्मिनल वेलोसिटी, if the velocity suddenly decreases, so parachute is the only reason that opposes or that decreases the velocity, right, clear, समझो भाई, जी सर। that's it। चलो let's move on to the next question। Okay, so they're saying mass of the parachute is the mass of the parachute is 95 kgs, okay. Calculate for the parachute between time t to time 15 to 17 the average acceleration, speed time graph है, the acceleration should be अच्छा, if you write from the gradient of the graph then it would be uh, a safe a safe side for you, okay, and then just use the formula, okay। So अच्छा बाय द वे मैं इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट सही देख रहा हूँ कि नहीं देख रहा हूँ, क्यों 21 स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, यस, ओके, चलो।
So so at 15 time remains the same, time 15 ही रहेगा, right? 15 comma and 50, right? Y axis has 50 and okay, अच्छा 10 12 14 15 and 16, 10 12 14 16 and 18. Okay, so 17 would be somewhere right here. Okay, so it would be um 20.5. So 17 comma 20.5. Okay, now we have 2 points, so हम यहाँ पे कर लेते हैं. So 20.5 minus 50 divided by 17 तो 19 पे 17. आ रहा है. क्या मतलब गलत हुआ कुछ? वो टाइम 17 उसका y एक्सिस पे वैल्यू 19 आ रहा है. अच्छा, एक मिनट भाई. 16 ये 17 आ रहा है, ऐसा कह रहे हो? 20 आ रहा है जी भाई, सर. मेरा एग्जैक्ट 20 आ गया. जूम इन करके मैंने देखा भाई. चलो जी सर, मेरा भी 20 आ 20 आ रहा है. अबे है भाई, कहाँ तुम चले जाते हो यार बार बार. अच्छा, 17 पे 20 आ रहा है, 20 हम ले लेते हैं. 20, चलो 20 आ गया. सही है. 20 एंड 50 एंड 17 एंड 15. फाइन, निकाल दो कितना आ रहा है भाई. हम यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट. ओके, -15. -15. -15 सही है. ओके भाई, परफेक्ट हो गया. नेगेटिव तुम लगाओ, तुम्हारी मर्जी है, ना लगाओ, बिकॉज दे आर आस्किंग फॉर द एक्सेलरेशन एंड यू आर गेटिंग द डीसेलरेशन और द नेगेटिव एक्सेलरेशन. सो आई थिंक वो इसी तरह से लिख रहे होते हैं. सो ऑल द नेगेटिव साइन whenever they come in the calculation, so they always put the bracket. So if you want to write the negative sign you can, or if you don't, then just ignore it. Okay, now they're saying the average frictional force. Okay, so before that, अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने in most of the script this type of question was left undone by many of the students, right? वो जो एक log वाला question था, right, and the log was lifting upward on the inclined plane like this, right? तुम लोग ने, बहुत सारे बच्चों ने उसको छोड़ दिया था, right? Guys, you just need to plot all the forces, or you just need to draw all the forces, and आपने उसको सिर्फ simplify करना था न्यूटन सेकंड लॉ लगा के, right? Like if you have the parachute right here, so उसका weight downward act कर रहा होगा, right? सही है. So the weight is basically mass times gravity, right? So 95 times 9.81 is weight. Okay, and we are basically working at in between 15 and 17, right? So in between 15 and 17 there should be some drag force, we don't know that. And we can say that the resultant force should be the weight minus the drag force equals to ma, right? This is the equation. Okay, so the weight is सर 95. इधर सेकंड लॉ लगाना लाजमी होता है. इसके अलावा क्या लगाओगे, तुम्हारे जहन में कोई आइडिया है? वो भी होता है ना, फॉरवर्ड फोर्स माइनस अच्छा, बैकवर्ड. वही तो लगाए. तो वो इक्वल्स टू एम ए करना है. देखो, देखो याद रखो कि ये जो फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स होता है. सो दिस इज द फॉरवर्ड फोर्स, वी कैन से डाउनवर्ड फोर्स, दिस इज द अपवर्ड फोर्स. ओके, अब देखो दो केसेस होते हैं. इफ द फॉरवर्ड फोर्स एंड द बैकवर्ड फोर्सेस आर इक्वल, विच मीन दिस इज द इक्विलिब्रियम केस, राइट? सो यू जस्ट पुट them equal to 0, right? And if they are not equal, if the system is accelerating, then you have to put ma, right? Is that clear? समझ रहे हो भाई? जी सर. माइनस डी, डी हमें नहीं पता है, राइट? इक्वल्स टू एम विच इज द मास 95 kgs. हसाम कुछ कह रहे थे क्या? एंड जी सर, मैं ये कह रहा था कि हम लोगों ने एवरेज एक्सीलरेशन निकाल दिया ना इस पॉइंट के बीच में, तो फिर फोर्स डायरेक्ट उससे नहीं निकल सकती. ओके, यानी आप ये कर रहे हो एफ इक्वल्स टू एम ए कर रहे हो डायरेक्ट.
जी जी। ओके कर लेते हैं, मैं करके दिखाता हूँ उससे भी। रुको पहले इससे कर लेते हैं, मैं उससे भी करके दिखाता हूँ, जो आप लोग सोच रहे हो ना मैं बताता हूँ क्या हिसाब किताब बना रहे हो। सो खैर 95 इंटू 9.81 सही है, और इसको अगर आप यहाँ पे ले आओ सो प्लस, सॉरी माइनस 95 इंटू -15 सही है, is equals to drag force. Okay, so just calculating the drag force, 95 into 9.81 सही हो गया, and plus 95 into 15. So I am getting the final answer as 235695. So 2400 अगर हम ले लें in 2SF, 2400 in 2SF. Okay, so ये भी हमारे पास सही हो जाएगा, right? अच्छा, if you guys are thinking that way, कि if you're just taking F equals to ma, right? F equals to, अच्छा, by the way, do not ignore this negative sign, okay, in this calculation. बहुत से बच्चे, if you ignore the negative sign, you just mess up the whole question, okay? You basically find out the deceleration over there, okay? So you should have to put the negative sign in it over here, right? So this is the first point. Now the second thing is, so you have to put if you're using F equals to ma, Hazam सुन रहा है भाई? If you're using F equals to ma, सही है? So just write the mass 95, okay? Acceleration as -15, right? यहाँ तक अभी सेम चल रहा है सही, ये काम हमने कर लिया, okay? So this will give me 95 into 15, so um I'm getting 14 to 5, okay, as my which force? आसाम बता सकते हो ये क्या फोर्स निकली है? यस आसाम। अबे यार पता नहीं कहाँ गया। जी सर जी। कहाँ बैठे हो तुम, कहाँ बैठे हो, किसके बॉर्डर पे बैठे हो? मैं इधर ही बैठा हूँ, इधर तो नहीं बैठे सोच हो रहा हूँ तुम। कौन सी पोस्ट। ये वॉशरूम में है। हाँ ये मेरे को यकीन था, ये तुम भाई बाहर आ जाओ, हाँ, जिंदगी में तुम सर बाथरूम कसम से तुम्हारे गुजर जाएंगे, कसम खुदा के तुम नालियों में जाके मरोगे तुम, साला बे भाई। सर कसम से बाहर फोर्स सोच रहा था कौन सी। अच्छा, लगा तो नहीं रहे हो फोर्स? जी। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, देखो, so देखो, whenever you use F equals to ma, so this force will always going to be the resultant force, okay? So this should be the resultant force that you calculated, okay? This is the resultant force, right? And in this case resultant force should be the upward minus downward, okay? So upward minus downward equals to resultant. So आप कहोगे कि resultant force is basically equal to upward yet forward minus backward, क्या right? Because the system is moving downward, okay? So forward is the weight minus the backward is the d, okay? So you can put 1425 right here, and weight is just 95 into 9.81, right? Acha, by the way, you have the negative sign with this course, okay? And minus d, right? So we basically end up getting the same thing जो कि हमने purple में किया है, okay? Is that clear, Sam? जी जी सर, अब समझे। Perfect, चलो, so the first question is done, okay? The second question, आ जाओ। वही मादी क्वेश्चन भेजा था तुमने मेरे ख्याल से। जी सर। अच्छा जी, ओके देखते हैं। सो बेसिकली दे आर सेइंग define the electrical resistance, okay? So resistance is basically potential potential difference per unit current, okay? अच्छा, if somebody write voltage per unit current, let me show you the examiner's report. So look, the definition of the resistance was given by a small minority candidate. Look, so बच्चों ने ज्यादातर डेफिनेशन गलत लिखी होती हैं ए लेवल्स पे आके, राइट? एंड वेयर दे लूजेस मोस्ट ऑफ देयर मार्क्स, ओके? सो लुक, they're saying resistance is equal to potential difference. If somebody write resistance is equal to voltage
per unit current. This is the incorrect definition. It won't earn you any mark, okay? Because voltage is a generalized term, okay? रेजिस्टेंस के अक्रॉस जब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ना होगा तब तक करंट पास नहीं करेगा, ओके? सो यू शुड हैव or you should require a potential difference across a component in order for the current to flow, right? So ये आपके पास एक प्रॉब्लम था, खैर। अच्छा जनाब, now they're saying a circuit is set up to measure the resistance R of the metal wire. The potential difference PdV across the wire and the current in the wire are to be measured. Draw the circuit diagram for the patterns that could be used to, okay, 3 number there, 3 number, okay. So to measure the resistance of the metal wire, okay, so the resistance of the metal wire, so potential difference across the wire and the current is are to be measured, okay. So let's say I have this potential difference, okay, and I have a wire, okay, okay, and I am connecting it with the ammeter. Ammeter यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, so यहाँ पे हमने लगा दिया ammeter, okay. Ammeter should always be in series with the circuit, okay, and जो voltmeter होगा, so your the potential difference across the wire and the current, okay. So potential difference के लिए you have to shits, you have to put the voltmeter, okay, and the voltmeter should always be in parallel, so like this, okay. This is the voltmeter. If somebody draw the voltmeter right here, he will also get the mark, okay. If somebody draw the voltmeter right here, he will also get the mark, okay. So सब चीज़ें सही है, okay. So draw the circuit diagram parallel में, okay fine. अच्छा, बाय द वे हम लेबल अगर कर दें तो हमारे लिए ज़्यादा सही हो जाएगा सर्किट। सो हम इसको कह देते हैं पावर सप्लाई। सो दिस इज़ पावर सप्लाई, पावर सप्लाई, दिस इज़ द एमीटर। सही है। और इसको हम जो है वो पोटेंशियल डिवाइडर कैसे, पोटेंशियल डिवाइडर नहीं यार, क्या तो नाम होता है इसका, पोटेंशियोमीटर कह सकते हो, पोटेंशियोमीटर, ओके। एंड अच्छा, एंड बाय द वे, ओके ओके ओके, वेरिएबल पावर सप्लाई हम लगा देते हैं बिकॉज वी हैव टू, ये हम इसको ये कर देते हैं, राइट। To measure the resistance of the metal wire, okay. So in order for the resistance, if we can vary the voltage, so उससे हमारे पास आसानी हो जाएगी, राइट। ओके फाइन, ये हो गया। अच्छा, इसकी इसी मार्किंग की भी देखते हैं, एग्जामिनर रिपोर्ट भी देखते हैं क्या कह रहा है। ओके, सो मेटल वायर इन सीरीज विद अ पावर सप्लाई एंड एमीटर, ये तो हमने लगा दिया। वोल्ट मीटर इन पैरेलल विद अ वायर, ये भी हमने कर दिया है। ओके, रियोस्टेट इन सीरीज with a power supply or potential divider arrangement or variable power supply. Okay, I put the variable power supply in order for the voltage or current to be varied, okay. अगर हम इसकी ये देखें, so the circuit diagram were generally of poor quality. Many had no matter or had no meters, or the voltmeter was placed in series with the ammeter with an ammeter. There were very few candidates that include any means of varying the current, okay, in the circuit, such as a rheostat, okay. A rheostat is basically just the potential divider, okay. So or variable resistor. So if you add the variable resistor, so you can vary the current. I just add the power supply, okay. So
it is useful for the to vary the current. Okay. सर अगर हम वो पोटेंशियोमीटर लगाते हैं और बैटरी लगाते हैं नीचे तो उससे मसला होता? पोटेंशियोमीटर लगाते हो, बैटरी लगाते? नहीं। गैल्वेनोमीटर सॉरी। नीचे? नहीं, वो अलग सेटअप बन जाएगा। या चलो वो ओके अच्छा। थोड़ा सा अलग सेटअप बन जाएगा वो। मतलब सही है अगर वैसा बना तो? यार हमें जो है ना, हमें वो काम नहीं करना जो यहाँ पे उससे उससे जो काम होते हैं ना, वो हमें करना नहीं है, तो इसलिए ना बनाओ तो बेहतर है। सही ठीक हो गया। अच्छा जी, आ जाओ भाई। सो तुमसे कह रहे द रीडिंग ऑफ द पोटेंशियल, द रीडिंग फॉर पी डी V and the corresponding current I are obtained. The these okay shown. Okay, fine. So you know that a normal IV graph for a conductor looks like this. It should pass through the origin. Okay, and if it is not passing through the origin, this means you have the systematic error. Okay, the first thing. And if the points are not on the line, so you can say that we have the random error. Okay. So let's see. They're saying explain how indicate that the readings are subjected to the systematic error. The सर ये अभी वाला पॉइंट रिपीट करें जो ऊपर कहा था आपने? Okay, एक मिनट देना बस। The line of the best fit, the line of the best fit is not passing through the origin. Okay, so basically, I was saying that the actual graph for IV looks like this, okay, or should look like this, okay. Now, if the graph or if the drawn graph is not passing through the origin, this means that there should be some systematic error, some error coming from the system that shift the whole graph up. So that is why. Okay, ये चीज मैंने एक बात कही, राइट। दूसरी चीज कि if the points are not exactly on line, तो this shows the random error, the human error, the error caused by the experimenter. Okay, so that is why, like तुम लोग जो P3 के अंदर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो क्वेश्चन 1 के अंदर, so you used to draw the line of best fit, and that is because you guys and we are the humans, and we should have a lot of human error in the experiment. So to avoid all of them, हम जो है ना एक line of best fit बनाते हैं जो कि हमें एवरेज वैल्यू बता देती है उन सारे पॉइंट की, राइट। सो ये क्लियर समझ रहा भाई? सो um, random uncertainties are basically, or random errors are basically, um, the points are not on the line. Okay, fine. Now they're saying use the data from figure 2.1 to determine R. They're saying explain your working. Okay, so if they're saying explain your working, you have to write something in some sentence, right? To get the full mark. Okay, so first of all हम ये कह सकते हैं कि भाई gradient is equal to 1 over the resistance। पहली बात आपने ये कह देनी है, सही है। नाउ ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। सो योर ग्रेडियंट वुड बी, यहाँ से पास हो रहा है 0,0.05। ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, एंड द सेकेंड पॉइंट इज लेट्स से let me take this value, so 4 comma, and it is 0.23. 0.23. Okay, 0.23, perfect by. So 0.23 minus 0.05 divided by x-axis gives me 4 minus 0, कितना आता है? 0.045. ओके, दोबारा बताओ। 0. 045. ओके, सो ग्रेडियंट हमारे पास आ रहा है 0.045। ओके, फाइन। नाउ
since the gradient is the inverse of the resistance, so अगर हम कर लें, so for the resistance should be 1 over r, 1 over gradient. Okay, कितनी resistance आती है? 22.2. 20. 22.2. Okay, fine. 22.2. So you can write 22.2. Yeah, 22 just. अच्छा, by the way हमने uh, uh, um, चलो एक इसकी इसकी मार्किंग की इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट देखते हैं, इसमें एक मसला मुझे लग रहा है, वो मसला मैंने यूज़ नहीं किया. Okay, so they're saying a correct value for the resistance was calculated by a significant number of candidate. The calculation of the uncertainty in I wait, गलत हो गया कुछ. सी से पहले वाला है, सी से पहले वाला पार्ट हम पढ़ रहे हैं. Okay. Okay, very few candidates realize that the graph shows a systematic error in the ammeter reading, and hence they did not make a correct calculation of the resistance. Okay, हमने कैलकुलेशन हमने कैलकुलेशन हमने कैलकुलेशन तो सही की है. वी आर गेटिंग द करेक्ट आंसर and use of v and corrected I values from the graph. Okay, so fine, you have to consider the corrected values, right? This is what you have to explain. Okay, so एक्सप्लेनेशन के अंदर एक और चीज़ भी मैं कह देता हूँ कि भाई सिंस सिंस current has or ammeter has um, zero error, zero error, which should be should be corrected corrected by taking the difference in current reading. Okay, so now this is my explanation of the working. Okay, now I'll get like the full marks. Okay, don't say कि भाई हम ये तो इतनी सारी चीज़ें आपने लिख दी है, हम कैसे लिखेंगे. तो थोड़ा सा जो है ना, इसको अगर आप करना चाहो तो सही कर लो, थोड़ा सर टाइम. ये जो आपने लिखा है हम्म. इसको एक्सप्लेन कर देंगे। अरे यार, अच्छा ऐसा कर लो. चलो भाई, सर देखो जीरो एरर एवरेज से भी हम फिक्स कर सकते हैं ना, एवरेज निकालने. किस चीज़ से. नहीं ना तो ब्रो, जीरो एरर हम लोग. देखो ज़ीरो एरर बेसिकली सिस्टमैटिक एरर है, एंड सिस्टमैटिक एरर रिक्वायर्ड रिकैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. तुम्हें खोल खाल के ना उसको दोबारा से फिट करना पड़ेगा. सो इट विल रिमूव द ज़ीरो एरर फ्रॉम द सिस्टम, राइट. सो हम एवरेज से वी कैन मिनिमाइज a random error like the error that we create or that we do, or we can minimize it using the um, taking the average and repeating the experiment and so on, right. बट इफ़ यू हैव द सिस्टमैटिक एरर, तो उसको आपको apparatus रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा, और वो आपको जो है ना उससे आपके पास ये ख़त्म होगा, राइट. इब्राहिम देखो, हमने जब इसकी वैल्यू ली है, तो एक वैल्यू ये ली है और एक वैल्यू ये ली है, राइट, एंड वी सब्ट्रैक्ट द टू वैल्यूज, ऐसे ही क्या है इब्राहिम. सो व्हेन वी डू द सब्ट्रैक्शन, तो दिस इज बेसिकली व्हाट वी करेक्टेड द ज़ीरो एरर, राइट. क्लियर, क्या ये बात समझ में आती है. तो सर उधर आपने जीरो एरर लिखा है, हम सिस्टमेटिक एरर नहीं लिख सकते? वन ऑफ द काइंड ऑफ सिस्टमैटिक एरर इज जीरो एरर. सो वो दोनों एक ही चीज बोल रहे, एक ही चीज का मतलब होता है, सही है. यानी देखो, अच्छा ओके। इसका इस ग्राफ का मतलब क्या है. At no voltage the ammeter shows 0.05 amperes of current, right, which is not possible. If you don't have a potential difference in the circuit, then there won't be any current, or there shouldn't be any current in the circuit, right. But they're showing some current, right, so this is not possible. So this is the systematic error. If the question asks you
what is the exact value of the systematic error shown on the ammeter. So you have to quote this thing, okay, because at that time there isn't any voltage or any power supply or any energy in the circuit while you have some current flowing in it, so this means it's an error in the instrument. Fine, now let's move on. In another experiment, a value of R is determined from the following data. Current is given, potential difference also given. Calculate the value of R together with its uncertainty. Give your answer in. Okay, fine. So you can use V equals to IR, V equals to IR, right? So the voltage is 6.8, the 0.64 is equals to R, okay? And resistance कितनी आ रही है guys? टेन Answer पॉइंट कौन सिक्स टू फाइव 10.625. 10.625. Fine. Now, what will you do? Um, to find the absolute uncertainty in the resistance, आपके पास formula V equals to IR. So V over I is basically R. So percentage uncertainty in R should be equal to the percentage uncertainty in V plus the percentage uncertainty in I, right? And um, the V has a percentage uncertainty would be 1.1 divided by 6.8 into 100, right? And plus the current is 0.01 divided by 0.64 into 100, right? And कितनी आती है भैया? सर 1.5, दोनों की 1.5 आ रही Okay, 1.5 and 1.5. 1.5 plus 1.5. So I'm getting 3 as my percentage uncertainty, right? सर ये जो परसेंटेज की होती है हम इसको हर वक्त दो सिग्निफिकेंट फिगर्स लें, क्योंकि कई कई मैंने देखे हैं तीन भी लेते हैं। देखो डाटा पे डिपेंड कर रहा होता है, सही है, कि वो डाटा किस तरह का है, उसी हिसाब से आप लेते हो, सही है। सो यहाँ पे खैर ये हमें ओके। परसेंटेज अनसर्टेनिटी का काम नहीं है। क्या बोल रहे हो, कौन बोल रहा है? सर ये पहला वाला 1.5 नहीं है, 1.47 है। ओके, सो 1.47, दूसरा वाला फिर 1.562। 1.5। 1.56, ओके। तो थोड़ा सा अलग बन रहा सर होगा पहले फिर। वाले को राउंड नहीं करेंगे? अभी क्यों कर रहे हो? 1.5। इंटरमीडिएट राउंडिंग पे ना गालियां देता है भाई, समझ लो ना। यू ओनली अलाउड टू राउंड ऑफ एट दिस पॉइंट, ओके। जब तक यहाँ तक नहीं पहुंचो यू आर नॉट अलाउड टू राउंड ऑफ। ये मैंने थ्री पूरी लिख पॉइंट पूरा लिख दिया। जीरो थ्री टू फाइव 3.0325, ओके। 3.0325, फाइन। ना पूरा पूरा लिखो, अभी राउंडिंग ऑफ की कोई जरूरत नहीं है, राइट। नाउ अब क्या करोगे? आपको पता है कि भाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर शुड बी डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर, राइट, इनटू 100, इनटू 100, ओके। सो 3.0325 into resistance is 10.625 divided by 100, right, is equals to delta R. कितना आता है भाई? 0.322। 0.322। Okay, 0.322. Okay. Now you know that the absolute uncertainty should be in 1 SF. Okay, so you are only allowed to write 0 0.3. Okay, and this 0 0.3 has 1 dp, one decimal place. Okay, so whatever the value of r, it should have one decimal place. Okay, so it can be written as 10.6. Okay, with one decimal place. Okay. सर इधर एक डाउट है। Mm-hmm. इधर हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी वाला क्यों यूज करते हैं, वो नॉर्मल वाला क्यों नहीं यूज कर सकते? मतलब क्या मतलब, दोबारा पूछो। मतलब वो डेल्टा वी ओवर वी प्लस डेल्टा आई ओवर आई, वो नहीं यूज कर सकते इसमें? यस, वो भी कर सकते हो। मतलब आप परसेंटेज के अंदर ना कन्वर्ट करना चाह रहे हो, देन डोंट वरी, वो भी आप कर सकते हो, बट फिर यहाँ पे आपके पास ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, जिसको हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कहते हैं, राइट। क्लियर हो गया? यहाँ ना यहाँ पे 100 आएगा, ना यहाँ पे 100 आएगा, ना यहाँ पे 100 आएगा, राइट। सो उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। क्लियर हो वहाँ गया? तो सेम ही आएगा। यस। क्योंकि देखो 100 का तो कोई काम नहीं हो रहा ना। वो 100 यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, वहाँ पे जाके डिवाइड हो गया सारा 100, तो खत्म हो गया ना। समझ लो। देखो द मेन हम्म। प्रॉब्लम ओवर हेयर इज अनसर्टेनिटीज ऐड होती है, राइट।
एंड यू कैन नॉट ऐड द टू डिफरेंट क्वांटिटीज, एक्स और वाई कभी भी ऐड नहीं होते, वो वैसे ही रहते हैं, ओके। तो यू कैन नॉट ऐड द टू डिफरेंट क्वांटिटीज, सो दैट इज़ वाई हम उनकी अनसर्टेनिटी निकालते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ताकि उनका यूनिट सेम बन जाए, सो दैट वी कैन ईजिली ऐड, राइट। और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के अंदर भी हम जब उनका यूनिट निकालते हैं तो वो उससे यूनिट कैंसिल हो जाता है, राइट, क्योंकि ऊपर एरर होता है उसी क्वांटिटी का सेम यूनिट आ रहा होता है, और नीचे वो क्वांटिटी होती है उसका भी वही यूनिट आ रहा होता है, तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, राइट। सो दैट इज़ वाई, बस ये हम काम कर रहे होते हैं, इस वजह से जो है ना हम इसको डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ना भी करो तो भी उससे काम सही हो जाएगा। चलो आ जाओ भाई। सो तुमसे कह रहे प्रेशर, प्रेशर होता है भाई, प्रेशर बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया, ओके। सो प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ओके। अच्छा, इसको इसको फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेट अवे आ रही है, इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट देख लेते हैं अगर कुछ कह रहा है। डेफिनेशन वाज गिवन बाय ओनली वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट, बाप रे, बड़ा बेड़ा गर्क था यार इस पेपर में तो बच्चों का। अच्छा जनाब, explain in term of the air molecule why the pressure at the top of the mountain is less than the pressure at the sea level, okay। So as you move up, आपके पास जो होता है वो लो डेंसिटी की वजह से मेरे जहन में आ रहा है। सो और आपके पास जो है वो वाई द प्रेशर एट द टॉप ऑफ द माउंटेन, सो वहाँ पे आके बाद वॉल्यूम ज़्यादा होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से कोलिजन कम हो जाएंगे, कोलिजन की वजह से ओके प्रेशर कम होगा, ये कह देते हैं सही है। या what we explain term of why the pressure at the top of the mountain is less than, so हम कह रहे थे कि भाई at the top the volume would be greater, right? So molecules, सर लेस लेस डेंस पार्टिकल ऊपर होते हैं ना, हाँ जी, तो डेंसिटी से लिख सकते हैं। um, देखो वो वो प्रेशर, वो फोर्स, वो फॉर्मूला भी यही आता है ना, रो जी एच आता है, हम्म, तो फिर डेंसिटी को हम वो रिलेट कर सकते हैं। ये आ तो रही है ना, वॉल्यूम हमने बड़ा तो किया ना कि एट द टॉप द वॉल्यूम वुड बी ग्रेटर, सो वॉल्यूम ग्रेटर होगी तो डेंसिटी कम हो जाएगी, समझ लो, जी जी जी। सही है ना, तो ये हो जाएगा, सही है। सो तुम डायरेक्ट कह दो, या डेंसिटी से बजाय डायरेक्ट वॉल्यूम कह दो, बिकॉज वॉल्यूम इज लाइक वो एक डायरेक्ट क्वांटिटी है, राइट, ग्रेटर, सो द वॉल्यूम, सो द मॉलिक्यूल कोलाइड लेस frequently, okay, um, and hence lesser force per unit area causing या causes lesser pressure, okay। सर वो लेस फ्रीक्वेंटली कोलाइड करेंगे, क्या चीज़? वो लेस फ्रीक्वेंटली कोलाइड करेंगे मॉलिक्यूल्स। नहीं नहीं समझ में आई यार आपकी बात। बोल रहा हूँ लेस फ्रीक्वेंटली कोलाइड करेंगे हाँ मॉलिक्यूल्स जी हाँ जी हाँ जब जी, वॉल्यूम ज्यादा होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यस यस यस, लेस फ्रीक्वेंटली कोलाइड करेंगे, सही हो गया। अच्छा जनाब, चलो इमाद क्या कहना चाह रहे हो, कुछ कह रहे हो इमाद? नहीं सर, गलती से। ओके ओके, चलो अच्छा, इसी मार्किंग की इसी एग्जामिनर रिपोर्ट देख लेते हैं, एग्जामिनर क्या कहते हैं इस बारे में। The majority of the candidates were unable to explain the basic theory of how molecule of the gas produces the pressure. बट यार ये तो क्वेश्चन में पूछा भी नहीं है उसने, हाउ दे आर प्रोड्यूसिंग प्रेशर, ये तो पूछा भी नहीं है। उसने कहा कि इन टर्म ऑफ द व्हाई द प्रेशर एट द टॉप ऑफ द मॉलिक्यूल इज लेस देन एट द सी लेवल, आपका सीधा सीधा दिमाग जाएगा कंपैरिजन पे, अजीब, ओके।
तो ये एक अजीब सी बात है, सही है। खैर आगे आ जाओ। तुमसे कह रहे हैं शो दैट शोज लिक्विड इन अ सिलेंडर सिलेंड्रिकल कंटेनर। अच्छा जी, उसकी डेप्थ आपको दे रखी है एंड दे हैव गिवन यू द डेंसिटी, द क्रॉस सेक्शनल एरिया, कैलकुलेट द वेट ऑफ द कॉलम कंटेनर। सही हो गया। सो वेट ऑफ द कॉलम वुड बी, डेंसिटी है, वी हैव so pressure is equals to rho gh, and we can say that pressure is equals to force upon area, rho gh. Okay, so mm, so अगर हमें weight निकालना है, so to find the weight, F become the weight, okay, and rho g and A times h times A, right, and then this become कितना बन जाएगा the density 13600 into G 9.81 into H is given as 0.25 and cross section area is given as 0.45. ओके जी, कितना आता है भाई, निकाल दो। 1500, 15,000। ओके भाई, 15,000। अच्छा जी, ओके, सही आ रहा है। चलो, कैलकुलेट द प्रेशर ऑन द बेस ऑफ द कंटेनर caused by the weight of the liquid. Okay, so base of the container, they're mentioning that, so pressure is equals to force upon area, and the force is basically what the liquid exerts. So basically whatever the weight you calculated, just you have to put that in. Okay, so 15,000 divided by the base area, which is 0.45. Okay, रो जी एच नहीं कर सकते इसमें? rho gh अगर करोगे तो you will get the same thing, I think so, but wait, बेसिकली वो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बोल रहे हैं ना, बेस एरिया भी बोल रहे हैं, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट मेरे जहन में ये फार्मूला लग रहा है। और प्रेशर है ना, प्रेशर रोज ये भी काम करेगा यार, चेक कर लो, चेक कर लो, ये ऐसा जी नहीं होना सेम सर ही आ चाहिए। रहा है। लिक्विड हम्म। सर लिक्विड में बस जीरो जीएच नहीं लगता? दोनों लगा सकते हो ना यहाँ पे, रो जी जी सर एच। सेम ही आ रहा है देखो दोनों में। पहली, ये एफ इक्वल्स टू एफ ओवर फोर्स अपॉन एरिया, और रो जी एच दोनों एक ही चीज होती है। ओके, सर आप एक सेकंड ऊपर जाएंगे। बोलो भाई। जी सर, दो ये जो यहाँ पे उन्होंने कहा है ना कि बेस हम्म। बेस ऑफ द कंटेनर, तो ये पूरी हाइट जो इन्होंने दी है 0.25, ये सारा प्रेशर बेस पे एग्जर्ट कर रहा है ना? यस यस यस, जी ठीक। सही हो गया। प्रेशर हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ एक्सर्ट होता है, यानी नीचे वाली चीज पे। ओके, एक्सप्लेन व्हाई द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द बेस ऑफ द कंटेनर इज डिफरेंट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तुम कह सकते हो, राइट। सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। परफेक्ट, चलो ये क्वेश्चन निपट गया। अच्छा जी, कितने क्वेश्चन और है भाई, मेरी बैटरी खत्म हो रही है यार। सर प्लास्टिक सेकंड वाले में डिफॉर्मेशन। हम दोनों दोनों में से कोई से भी लगा सकते हैं। प्रेशर वाले फॉर्मूले में, हाँ जी, दोनों दोनों का जी आंसर बच्चे बता रहे हैं सेम आ रहा है। यस, दोनों दोनों एक ही चीज़ है, दोनों से सेम आंसर आएगा। ओके, वैल्यू तो बताओ भाई, वैल्यू वैल्यू तो बताई नहीं तुम लोगों ने। 33,000। 33,000, ऐसा। चलो परफेक्ट है भाई, आ जाओ भाई। डिस्क्राइब द डिफ्रैक्शन of monochromatic light as it passes through the diffraction grating. Okay, definition है, रट्टे लगा लो, सही है। um, spreading of monochromatic light as it सर move. कैन एक्सप्लेन द वर्ड why the pressure exerted on the base is greater again? Okay, okay, okay. So एक मिनट दो सर, मैं definition लिख के आता हूँ। So spreading of the monochromatic light as it move through
the grating. Okay, or slit or gap or aperture, anything, कुछ भी कह सकते हो. सही हो गया. सो ये आपके पास हो गया. अच्छा जनाब. फिर इसमें वो नहीं लिखेंगे सिंगल फ्रीक्वेंसी? क्या मतलब, क्यों सिंगल फ्रीक्वेंसी, क्या मतलब? मोनोक्रोमेटिक लाइट की सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है। यू आर नॉट एक्सप्लेनिंग द मोनोक्रोमैटिक नेचर ब्रो. तुम सिर्फ डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हो, राइट? समझ रहे हो ना भाई? सो डिफ्रैक्शन इज बेसिकली द स्प्रेडिंग ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट. ओके, लेकिन मैंने इसकी एग्जाम रिपोर्ट देखनी है, बल्कि देख लेते हैं, उसके बाद फिर उस पर जाएंगे पिछले वाले पार्ट पे. Majority of the candidates were unable to describe the diffraction of the light as it passed through the element of the diffraction grating. Okay, हमने ऐसे ही लिखा है, मे बी. एलिमेंट ऑफ द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हमने नहीं लिखा, जस्ट हमने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग लिख दिया. चलो. तुमसे ये कह रहा है कि भाई वेव पास थ्रू द एलिमेंट और गैप्स slits in the grating spread into the geometric shadow. मतलब वो जो पूरा इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा होता है, ये वो चीज़ उस चीज़ के बारे में कह रहे हैं. अच्छा जी. इमाम ज़रा ये चीज़ देख लो भाई कि आपके पास जो है, मतलब इन्होंने ना ये जो बेस है, इन्होंने इस बेस को देखा कि भाई इस बेस पे जो है ना प्रेशर जो भी, द प्रेशर दैट वी कैलकुलेटेड ओवर हेयर this one. So in reality, when they measured for the pressure at the base, so they found the greater pressure at the base, right? So the reason what we said is there should be some air pressure pushing the container further down, so you will feel even more pressure than what we calculated. Okay, clear? Yes, Imad. जी सर। Perfect. Now this is done. Okay. So white light is incident on the diffraction grating as shown in the figure 4.1. Okay. So if the question is of the diffraction grating, so straight away just write the formula. Okay. The formula says n lambda is equals to t sine theta. Okay. So fine. अच्छा ये सारी चीज़ें क्या है, I'll explain. Okay. Now they're saying white light. Okay. First order, zeroth order maxima. Okay, so over here n will be 0, and first order n will be 1, right? And first order n will be 1. Okay, so fine. Now the diffraction pattern formed on the screen has white light called zeroth order, and the color spectra in the other orders. Describe how the principle of the superposition used to explain the white light at the zeroth order. Okay. So white light at the zeroth order mean you have a constructive interference, and constructive interference is caused by the phase difference and the path difference, right? So you have to mention all the phase difference and the path difference, and उसके बाद जो है वो constructive interference, right? So हम ये कह सकते हैं कि भाई at zeroth order the phase and the path difference are both zero, both zero or same, दोनों कह सकते हो, right? So the displacement of the waves added to give greater overall overall um overall wave. Okay, सर look. डिस्प्लेसमेंट। फिर हम ये लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर. कंस्ट्रक्टिव भी कह सकते हो, हाँ जी कह सकते हो. देखो, उसने कहा है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को तुमने रिलेट करना है. ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तुम्हें डिस्प्लेसमेंट की टर्म में कहता है. ओके, सो यू हैव टू लाइक, बहुत अच्छा तरीका है कि जस्ट राइट और इंक्लूड द वर्ड डिस्प्लेसमेंट इन योर आंसर, सो दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ मार्क. ओके, if you just ignore it, so वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन रह जाएगा. ओके, आई एम शोइंग यू द एग्जाम रिपोर्ट, देखते हैं एग्जामिनर क्या कहता है. सो
The principle of superposition was not described adequately by majority of the candidate. Okay, so you'll get 2 mark maybe. The explanation of the production of the maxima with the white light required a description of the relation between the path difference and the wavelength of the red and blue. Okay, very few candidates were able to give the suitable explanation. Okay, a description of the relation between the path difference and the wavelength of the red and blue light. एक मिनट. The explanation of the production maximum with a सर white light is required. हाँ जी, बोलो बोलो. तो जीरोथ ऑर्डर ऑर्डर पे फेज डिफरेंस हमेशा जीरो होता है. हाँ जी, always phase difference part difference जीरो होता है, right? So यहाँ सर पे जिधरों हम्म 1 लिखा हुआ था, तो इधर डिस्ट्रक्टिव हो रहा है दोनों पर। नहीं कंस्ट्रक्टिव है ना भाई, फर्स्ट ऑर्डर कंस्ट्रक्टिव है. सही, यहाँ पे फेज डिफरेंस 360 का होगा, पाथ डिफरेंस जो होगा वो लैम्डा का होगा, राइट? एंड जब सेकंड पे सर जाओगे. 1 हम्म. और 0 दोनों पर कंस्ट्रक्टिव है। हाँ जी, इसके बीच में डिस्ट्रक्टिव है ना तो भाई. क्योंकि वो एन लैम्डा है ना इसलिए. वेरी गुड, हो वो सर गया. इसमें 0.5 1.5 भी सारे डिस्ट्रक्टिव होते हैं ना। हाँ जी, ये डिस्ट्रक्टिव है, सही है. ऑल्दो ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, यंग्स डबल स्लिट नहीं है, बट यस इसके अंदर भी उसी तरह से काम उसी तरह से होता है. ओके, चलो आगे आ जाओ. So they're saying the difference in the position of the red and the blue light in the first order spectrum. Okay, describe how the principle of superposition is used to explain the difference in the position of the red and blue light. Okay, so red light has a different wavelength, blue light has a different wavelength. Okay, so the different wavelength causes the different path differences. Okay, and या different phase difference भी हो सकता है क्योंकि दोनों के अंदर wavelength आती है, right? So, and different phase differences and different part differences will separate the red light and the blue light, or red spot and the blue spot. Okay, so आप ये कह सकते हो, right? सर हाँ जी. हम ये कह सकते हैं इनकी वेवलेंथ अलग हैं, तो अलग नंबर ऑफ ऑर्डर्स बनेंगे। अलग नंबर ऑफ ऑर्डर्स बनेंगे, वही वही, हाँ सही है. सो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई, since the red and blue blue light has the different wavelength, has a different wavelength. Okay, which causes the path difference and phase difference and phase difference to be different. Okay, so आप कह सकते हो कि भाई इसकी वजह से क्या होगा. सो दे both seen separately. चलो भाई आगे आ जाओ. सर एक चीज क्लियर करनी थी, ये इसको हम अगर फॉर्मूले से रिलेट करके एक्सप्लेन करें, वो n फॉर्मूला इक्वल टू टी साइन थीटा ओवर लैम्डा, तो दोनों का नहीं, वेवलेंथ अलग है दोनों का ना। एन डिक्रीज होगी ना. हम वही वही अगेन उसी से रिलेट कर रहे हैं ब्रो, दोनों का. हम एन लैम्डा इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा ही कह रहे हैं, राइट? देखो डी साइन थीटा दोनों का सेम होने वाला है, डी देखो दोनों का सेम होने वाला है, राइट? एन आपके पास जो फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर दोनों के लिए आप काम कर रहे हो. तो एक का फर्स्ट ऑर्डर कहीं और बन रहा होगा, दूसरे का फर्स्ट ऑर्डर, उसके लिए थीटा फर्क हो जाएगा, राइट? लैम्डा की वजह से थीटा पे फर्क आ जाएगा, राइट? बस ये आपके पास है. सो जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ ज़्यादा आएगी, जिसका लैम्डा कम होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी, दैट्स इट. ओके, क्लियर हो गया? चलो जी। आ जाओ भाई. नाउ देयर सेइंग वेवलेंथ दे रखी है, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा है, एंगल भी दे रखा है, फाइन. सो एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, सही है. सो एन हमारे पास है, सेकंड ऑर्डर है, सही है. लैम्डा हमारे पास है 625 एक्सपोनेंट -2 -9, सॉरी,
एंड डी साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा, डिवाइड कर देते हैं हम साइन थीटा इज 61। ओके, चलो। एंड ये आपके पास बन जाएगा। अच्छा जी, सही। डी निकाल दो, कितना आ रहा है? 1.429 exponent -6. ओके, 1.429, सो 1.43 हम ले लेते हैं, 1.43 ले लेते हैं, एक्सपोनेंट -6। ओके, चलो परफेक्ट हो गया, आगे आ जाओ। सर ये फाइनल आंसर है भाई? अबे नहीं ना, फाइनल आंसर तो नहीं होना चाहिए, ये तो गलत आ रहा है, इतनी छोटी तो नहीं आनी चाहिए। वेट वेट वेट, 1.429 एक्सपोनेंट -6 ना। सो ये जो बेसिकली ये जो डी है, स्मॉल डी, ये हमें बता रहा होता है सेपरेशन बिटवीन वन लाइन, या सेपरेशन या विड्थ ऑफ द वन लाइन। ओके, और हमें ये कह रहा है कि पर मीटर के अंदर कितनी आ रही है, राइट? So if one line is basically occupies this much distance, 1.49 exponent -6. So how many lines will be there in one? How many lines will be there in 1 meter? Okay. So you just need to do the cross multiplication. Okay. So 1/1.46 x 49 exponent -6. कर लो दो. 699695. Okay. So we can say 7.0 exponent को बनना है कुछ 4 5 6 6 या 5 exponent 5. बन रहा हो? 5। 505। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा जी, और अगर तुम ये देख लो, इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट या मार्किंग की में, minority of the candidate were able to use an expressive expression related to the diffraction gradient. Very few were able to differentiate between the number of lines and the separation between the, मैंने भाई होशियारी कर दी थी कि मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया था, गलत हो जाता वो। ओके, now they're saying calculate the wavelength of another part of the visible spectrum that gives a maxima, for the different order at the same angle in part B. Okay, so they're asking, अच्छा, n lambda is equals to d sin theta. Okay, now वो आपसे ये कह रहे हैं कि वेवलेंथ निकालनी है। ओके, और आपके पास जो है, इन्होंने आपको ये बताया है कि विजिबल स्पेक्ट्रम होना चाहिए, राइट? अगर विजिबल स्पेक्ट्रम है तो मैं सोचो कि भाई विजिबल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ स्टार्ट कहाँ से होती है? तकरीबन 700 से होती है, नैनोमीटर से, और तकरीबन 350 तक जाती है, थ्री सर फिफ्टी इसमें तक। वो रेड ग्रीन और ब्लू का होगा ना? कैसे भाई? वो मल्टीप्लाई करके देख लो, उससे पता चल जाएगा, समझो। जी सर। देखो, अगर हम ये कहें, डी साइन थीटा हमने सेम रखा हुआ है, अगर हम ये कहें कि भाई ओके, calculate the wavelength of another part of the spectrum that give, okay, so हमारे पास n1 λ1 is equals to n2 λ2, अगर हम ये ऐसा कहते हैं, सही है? क्योंकि हमारे पास डी साइन थीटा सेम है, राइट? एक्सपेरिमेंट में हम चेंज नहीं कर रहे कुछ, उसने एक्सपेरिमेंट सेम रखा हुआ है, तो डी सेम है, उसने एंगल सेम कहा हुआ है, तो हमारे पास साइन थीटा भी सेम हो गया, राइट? अच्छा जनाब, एन हमारे पास जो है वो हमारे पास फिक्स आ रहा है, λ1 हमारे पास है 625, 625। ओके, सही हो गया, नैनोमीटर के अंदर है, वो हम देख लेंगे बाद में। एंड लैम्डा, पहले वाले केस के अंदर जो हमारे पास ऑर्डर आ रहा था वो सेकंड ऑर्डर आ रहा था, सही है? पहले वाले केस के अंदर हमारे पास सेकंड ऑर्डर आ रहा था, राइट? अब इसके अंदर जो है वो हम इसकी एन को अगर चेंज करें तो हमारे पास क्या बन सकता है? बनेगा कुछ, थ्री बन जाए, वो टू बन जाएगा, टू से थ्री बन जाएगा, थ्री से फोर बन जाएगा। अगर हम जरा करो जरा, अगर मैं इसको यहाँ पे वन ले लूँ, सही है, यानी एन टू सेकेंड ऑर्डर मेरे पास आ रहा है। सो इफ द सेकेंड ऑर्डर इज कंसिडर्ड एज एन टू इज कंसिडर्ड एज वन, so it will give me 2 times 2 times of 625, that is basically lambda 2 is 1250,
nanometer, which is basically out of the region, so you can ignore it. Okay, and if you consider 2 times of 625, okay, divided by, consider the second order instead of the first order, so it gives me 625, which is this one. So if I consider, okay, in the first case I consider n as 1 and 2 as 1, okay, n2 as 1 and n2 as 2, so it gives me 60 625. So if we consider the n2 as 3, so it gives me 416, 3 पे सर मैक्सिमम है। है ना, 3 पे आ रहा है, 416 बन रहा है 0.67, ओके। एंड अगर आप 4 देखो, इफ यू जस्ट डू फॉर द फोर्थ वन, सो फोर्थ वन इज गोइंग आउटसाइड द रेंज। 312 हाँ जी, सो ये आपके पास आ रहा है 3.125, and ये out of the range है, this is the first one is out of the range, the fourth one is, the last one is out of the range, right? Lambda 2 सर is हमारी रेंज क्या है? वेवलेंथ, उसकी विजिबल की स्पेक्ट्रम है, विजिबल स्पेक्ट्रम की वेव वो है, रेंज है, राइट? And visible spectrum start from 700 and ends at 350 nanometers. So this is the range, right? So if any value exceeds the range, then you have to ignore it. Okay. So yeah, clear हुआ? So only this is a possible option. So 420 अगर हम ले लें तो, okay? Is that clear, guys? Any problem? फिर 625 भी तो है। 625, 625 तो पिछले वाले पार्ट में हो चुका है ना? उसने कहा कि अदर सर देन पार्ट वन, ओके, अदर देन पार्ट वन, समझ लो। चलो, ओके भैया, अब आपके पास जो है, दिस इज डन, ओके। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ओके, आ जाओ। सो देयर सेइंग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, किसी को याद है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होती है? जो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप। कब? जब आप, लोड यस, यू हैव टू मेंशन दैट, जब वो व्हेन द लोड इज removed, the object cannot return to its original shape. Okay, now, so they have given you a uniform cross-sectional area, okay, of a length, okay, breaking stress is this much, young modulus is that much, calculate the breaking force, okay. So E equals to FL, straightforward question है, over AE, right? So force, the force is given as, like निकालनी है तुम्हें, and length तुम्हारे पास है 1.75, right? And divide that by, area is given as 1.54 exponent -6, and you have the extension, cross-sectional area, ब्रेकिंग स्ट्रेस, ओके, ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया हुआ है पूरा, ओके, तो वो ब्रेकिंग स्ट्रेस में एक्सटेंशन भी आ जानी चाहिए, आ जाएगी, नहीं आएगी? सर डायरेक्ट वो लगा लेंगे ना, स्ट्रेस इक्वल्स टू वन फोर्स ओवर। ओवर एरिया, हाँ, वहां से यस, निकाल वही देंगे। करना था। सही है, सही है, सही है, बेहतरीन है। लाइक अगर हम ये कर लें फोर्स अपॉन एरिया, तो ये क्योंकि एक्सटेंशन नहीं दी हुई, सो 2.2 एक्सपोनेंट 8, राइट, इनटू एरिया हमारे पास है 1.54 एक्सपोनेंट -6 इज इक्वल्स टू फोर्स, कितनी आती है? 340। 340, ओके, फाइन, आगे आ जाओ, एक्सटेंशन निकालनी है, अब ये कर लेते हैं, सही है। सो आपके पास जो है वो 340 की फोर्स आ गई है, सो ये लेंथ आपके पास है, दैट इज 1.75, अच्छा प्लीज़ यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेना, एफ एल अपॉन ए ई, सही है, एंड फोर्स आ गई है। नाउ आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया है 1.54 एक्सपोनेंट -6, और आपके पास यंग मॉड्यूलस है 1.2 एक्सपोनेंट 11, राइट, इज इक्वल्स टू ई, कितना बनता है भाई?
Yes, anybody? Exponent 11. So I am getting 3.3 exponent negative 3, yani 3.3 millimeter, 3.3, just 3.3, and you can put exponent negative 3. सही हो गया. अच्छा जनाब, सही आ रहा है. They're getting 1.31 exponent negative 3. ओहो, क्यों भाई? वो 1.75 से सब्ट्रैक्ट करेंगे ना 1 पॉइंट, एक मिनट, क्यों भाई? सर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे याद से आया तो एक्सटेंशन का सर वो एक्सटेंशन है ना, तो मतलब व्हाट द डायरेक्ट एक्सटेंशन हमारे फॉर्मूले में है भाई. 340 आ रही है, सही है. और सर उसने नीचे स्ट्रेस चेंज किया तो फिर वो फोर्स भी चेंज नहीं होगी ओ मैन शिट, अभी तो वो डायरेक्ट पूरा स्ट्रेस चेंज हो जाएगा ना. मतलब आपके पास जो है, फोर्स अपॉन एरिया। हाँ ये पूरा आप चेंज कर लो ना, इस पूरे को आप ये ले लो, 9 एक्सपोनेंट 7 हो जाएगा. सही हो गया. और ये चीज़ बस ऐसी आ जाएगी. सही है. सो जस्ट आप इसको, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी एंड ये आपके पास आ जाएगा 9 एक्सपोनेंट 7. ओके. सो 1.31. ओके. ओ भाई गलत कॉन्सेप्ट नहीं बनाना प्लीज़. 1.31. ओके. देखो दिस इज द एक्सटेंशन, यू डोंट नीड टू सब्ट्रैक्ट इट और ऐड इट राइट इन ऑर्डर टू फाइंड द एक्सटेंशन अगेन. ओके. सो वो इनकरेक्ट कॉन्सेप्ट है. ओके. चलो. So they're saying is explain why it is not appropriate to use a young modulus to determine the extension when the braking force is applied. Okay. ओके. सो आपको पता है कि भाई आप अगर ग्राफ को देखो, सो अगर आप इसका ग्राफ देखते हो, सो ग्राफ आपके पास जो है पहले स्ट्रेट जाता है राइट, एंड देन थोड़ा सा बेंड होता है राइट, एंड देन थोड़ा सा ऊपर जाता है. ओके. एंड लाइक दिस, एंड देन यू आपके पास जो है ना यहाँ पे आके कहीं पे ब्रेक होता है. सही है. So they're saying why it is not appropriate to use a young modulus to determine the extension when the braking force is applied. So जब आपके पास braking force होगी, so at the point of braking आपके पास जो है वो young modulus या proportional नहीं होगा ग्राफ. अगर आप stress strain का ग्राफ बना रहे हो, so stress strain proportional नहीं होगा at the breaking point. Okay. So at the point of breaking stress and strain will not be equal. Okay. चलो भाई ये हो गया. नाउ लास्ट क्वेश्चन. अच्छा इसकी विल नॉट बी इक्वल मैंने लिखा, प्रोपोर्शनल लिखना चाहिए था. विल नॉट बी प्रोपोर्शनल, सॉरी इसको सही कर लो, विल नॉट बी प्रोपोर्शनल होना चाहिए. प्रोपोर्शनल. और इसकी अगर हम एग्जामिनर रिपोर्ट देख लें, सो देयर वर वेरी फ्यू कैंडिडेट रियलाइज दैट द यंग मॉड्यूलस वाज ओनली अप्रोप्रिएट वेयर द फोर्स वाज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन. ये हमने ये बात कही है. सो दिस इज द ब्रेकिंग पॉइंट. ओके. एंड यू आर वर्किंग ऑन दैट पॉइंट. ओके. अच्छा जी लास्ट पार्ट. सो लास्ट पार्ट सेज कि आपके पास जो है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम. ओके. तुम्हें बताने कि भाई प्रोटॉन इतने हैं, 92 है. तुम्हें बताने कि भाई न्यूट्रॉन इतने हैं, सही, 143 हो जाएंगे राइट. और तुम्हें बताने के इलेक्ट्रॉन इतने हैं, 92. दैट्स इट. ओके. आगे आ जाओ. Now they're saying the deflection of the alpha particle by the thin metal foil is investigated with the arrangement.
shown in the figure 6.1, all the apparatus is enclosed in the system. Okay जनाब, enclosed in the vacuum. अच्छा जी, अल्फा पार्टिकल की सोर्स है, डिटेक्टर आपको दे दिया है, path of the deflected alpha particle. Okay, fine. So the detector of the alpha particle D is moved around the path. Okay. Explain why the apparatus is enclosed in the vacuum. Okay. क्योंकि आपके पास जो अल्फा पार्टिकल निकल रहे होंगे वो क्या करेंगे, वो कहाँ जाएंगे, उनको भी तो आपने कहीं ना कहीं सेव करना होगा ना, अगर हम ये कहें, या लेकिन अल्फा पार्टिकल का प्रॉब्लम ये है कि अल्फा पार्टिकल तो ज़्यादा एयर के अंदर ट्रैवल ही नहीं कर सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई, सिंस द penetration power of alpha particle is very less the air in the air, so the system should be, so the system should be enclosed. Okay, ताकि अल्फा पार्टिकल जो है वो सुकून से ट्रैवल कर सके, अदरवाइज वो प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, क्या है अबे यार। अच्छा जी, देयर सेइंग एक्सटेंड एंड एक्सप्लेन द रीडिंग्स डिटेक्टेड बाय द डी व्हेन इट इज मूव अलोंग एक्स डब्ल्यू एक्स वाई पूरे पाथ पे बोल रहे हैं। ओके, तुम्हें पता है कि सेंटर पे रीडिंग सबसे ज़्यादा आनी है, साइड वेज पे बहुत कम आनी है और पीछे तो बहुत ही कम आनी है, राइट। सो बस ये तुम कह दो, सही है। सो एट एक्स, अच्छा जी, ग्रेटर रीडिंग greater reading will be at x. Okay, पहली चीज हो गई। हम्म, सर ऊपर हम आयनाइजिंग का मेंशन कर सकते हैं। हाँ जी, ग्रेटर पेनिट्रेशन पावर सिंस वेरी लेस, लो पेनिट्रेशन पावर का मतलब है बहुत हाई हाई आयनाइजिंग पावर है इस वजह से। सही है, दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं, सही है। सो अच्छा जी, सो सजेस्ट एंड एक्सप्लेन द रीडिंग डिटेक्टेड व्हेन इट्स मूव। अच्छा जी, हमें एक्सप्लेन भी करना है कैसे क्यों हो रहा है। सो ग्रेटर रीडिंग विल बी एट एक्स as most alpha particle goes undeviated, right, and very few detected can at some angle, ये पूरी मैं चीज़ें लिख रहा हूँ, some angle shows the charged nature of the nucleus and आखिरी में हमारे पास है कि, सर ये सिलेबस में है। यार ये पता नहीं सिलेबस में, मैंने देखा नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि सिलेबस में है। तुम लोगों को मिला नहीं मिला? सर क्योंकि एक पेपर में आप अल्फा पार्टिकल्स के क्वेश्चन आए थे, आपने बोला सिलेबस में नहीं। मैंने मास एनर्जी को बोला है। मास एनर्जी सिलेबस में नहीं है। अभी मैं देख लेता हूँ, देख के बता देता हूँ, देख के बता दूंगा मैं, डोंट वरी। क्योंकि सर सो ये पेनिट्रेशन वगैरह तो हमें नहीं करवाया, वो ओ लेवल्स में करवाया था। जी सर। ओके ओके, देख लेते हैं देख लेते हैं देख लेते हैं और सर किसी। पिछले पेपर में
पेपर में आपने मास एनर्जी कहा था है शायद, या करवाई थी यार आपने देखो, ये अभी? 2016 के बाद चेंज हुआ हुआ है, सही है ना। 2016 से पहले की जो भी चीज़ आ रही है तुम उसको इतना हैवी नहीं लो, ओके। तो पार्टिकल फिजिक्स 2016 के बाद से जो है ना वो तुम्हारे सिलेबस में पूरा पूरा है, ओके। 2016 से पहले का जो है ना उसमें मैं कंफ्यूज हूँ, तो मुझे वो चेक करना पड़ेगा। यानी 2012 का सिलेबस आप उठाओगे, 2016 का उठाओ, आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज़ उसने बाहर की हुई है, तो वो आपके पास है। ये करना है आपने, सही है, तो मैं बता दूंगा, सही है। तो खैर, लिख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। शो द चार्ज नेचर ऑफ द न्यूक्लियस एंड सम या very few detected um, at the backward direction, the backward direction, सही हो गया। So it shows small mass, small yeah, it shows the mass is concentrated in the nucleus, the mass। सर ये पार्टिकल को अनडेविएटेड, इसका हम ये लिख सकते हैं कि एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस। हाँ जी, बिल्कुल सही है, concentrated in the center। चलो भाई, ये हो गया। आगे आ जाओ, आखिरी वाला पार्ट निपटा दें भाई, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, घर घर निकलना है फिर। अच्छा जी। सो अब हमारे पास जो है, a beam of alpha particle produces a current of 1.5 ampere. Okay, calculate the number of alpha particle per second. Okay, per second। अब देखो ये तो तुम्हें आना चाहिए, राइट। सो Q इक्वल्स टू आई टी लगा दो, Q इक्वल्स टू आई टी, राइट। सो तो हमारे पास करंट दे रखा है 1.5 पिको, विच इज एक्सपोनेंट -12 इन 1 सेकेंड। सही है, सो ये बेसिकली आपके पास चार्ज आ गया, सही है। 1.5 exponent -12, okay। Now you know that one charge one charge has a value of 1.6 exponent -19। So how many charge will be there if you have the total charge value as this, okay। So cross multiply कर दो, so it will be सर one। क्यू इक्वल्स टू एन ई भी लगा सकते हैं ना? Q equals to एन ई। ME। एन एन एन। वही तो लगा रहा हूँ। अबे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तुम बता रहे हो, वही वही चीज़ मैं भी बता रहा हूँ, सही है। सो 9375000। 9375000 राइट। अच्छा देखो, यहाँ पे एक छोटी सी कहानी है, वो कहानी है कि दिस इज दे आस्किंग फॉर द अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल कंटेन 2+ चार्ज ना। सो ये हमने एक का चार्ज निकाला, तो तुम्हें जब तुम इसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा टोटल अल्फा पार्टिकल कितने, राइट। क्योंकि हर अल्फा पार्टिकल के बाद 2 चार्जेस है, राइट। तो इनको अगर तुम डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कितने, राइट। क्लियर हो गई ये बात। सो आई एम गेटिंग 4687500, सही हो गया। सो इसके अगर हम एस उसके अंदर निकालें, सो ये मेरे पास बन रहा है 4.67 बन जाएगा, एक्सपोनेंट 6 बन जाएगा, सही आ रहा है। अरे भैया सही आ गया। ये बोल रहे हो, ये बोल रहे हो, ये वाला फार्मूला उन्होंने लगा रखा है, सही है। चलो भाई, कहानी तो हो गई हमारी, आज की कहानी हो गई। अच्छा एक काम ही कर लेना, एक काम ही कर लेना, ज़रा जल्दी से जो है ना, ज़रा जल्दी से, निकलने से पहले सुन लो, सुनते जाना, सही है। ये ज़रा इसका पेपर ज़रा करके आना, नवंबर नवंबर 2012 एंड 22 वेरिएंट, ओके। ये तुम लोग का होमवर्क है, कल से पहले पहले चाहिए मुझे, सही हो गया। मैंने इसको अपलोड भी कर रखा है, ओके। सो अगर कोई मसला होता है, डिफ़िकल्टी होती है, वहाँ से देख सकते हो, वरना मुझे ये वाला पेपर चाहिए, ओके। और ये ज़रा जल्दी से कर लेना, या अगर तुम्हें 22 करना है तो 22 कर लो, 23 करना है 23 कर लो, तुम्हारी मर्ज़ी है, सही है। गुलमीना आपने 23 करना होगा, ओके। एंड गुलमीना पेपर मुझे चाहिए, पेपर नहीं मिल रहा आपका। चलो भाई, सही है सर। सही हो गया। चले जी, चलें, बस बहुत लंबी हो गई है आज के लिए, दे रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।
चले ओके गाइस, टेक केयर अल्लाह हाफिज। बच्चों, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह दोस्त हाफिज। अल्लाह हाफिज गाइस, सर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।